Good afternoon, students. So we will continue the same problem that we had left where in the last lecture. If you remember, the problem was to design a pre-stressed concrete post-tension deck slab bridge. The span was given as 9 meter and it was supposed to design for IRC AA tracked vehicle. The carriage width was 7.5 meter, so it was a two-lane bridge for 7.6 meter. So for that two lane bridge, we had started for the analysis. We had determined the forces acting on the bridge, the dead load because of the deck slab. First, we had assumed the thickness of the deck slab approximately on the basis of a thumb rule, say 50 per meter span. So on the basis of that, we had determined the self weight acting when the 1 meter width 1 meter wide strip was considered from the carriage width. Then the self weight of the bearing code was also considered. The bearing code was considered as 100 We had determined self weight of that also. Then we had assumed that let the strip is from the footpath. Say if this is the bridge, say the footpath, this is the cross section. Carriage width is also be there. First, we had considered 1 meter wide strip when it is from the carriageway width. Then we had considered 1 meter wide strip when it is passing from the footpath. And we had determined the self weight of this deck slab. We had determined the shear force. We had determined bending moment for deck slab. Then we had considered the self weight of bearing cord. That was also informed. It is a simply supported bridge. For bearing cord, the self weight was determined, the shear force, and the bending moment because of the bearing cord. Next, the 1 meter wide strip was considered from the footpath. The total self weight was determined. It is because of the deck slab, plus because of the footpath, and because of the railing. The shear force and the bending moment was determined. Is it right? Then we had considered the working load and allowable stress method so as to verify whether the dimensions provided are safe or not. How did we had verified the dimensions provided? From the limit state of serviceability criteria, from the limit state of serviceability criteria for the internal stresses, that is the limit state of serviceability for the maximum compression and cracking. If you remember, we had verified that the ZB must be greater than or equal to 1 minus eta ms plus mi divided by FTR. ZB must be greater than or equal to 1 minus eta ms plus mi divided by FBR. When we are solving problem using the allowable working load and allowable stress method with reference to limit state of serviceability, right? Limit state of serviceability. So in that case, we are having certain gamma f, the partial safety factor for load. So as to get the bending moment because of dead load, we had considered two different cases. When the 1 meter wide strip is considered from the carriage width, when the 1 meter wide strip is considered from the footpath. दोनों में से जो ज्यादा था उसके लिए हमने particular gamma f whatever was there for the limited state of serviceability that was applied for the live load.
we had assumed that the vehicle is acting at the center for the bending moment. This is the vehicle. The load distribution along was determined. Then the vehicle was considered at the center along the span and at minimum clearance across the span here, that was 1.2. This patch was determined on which the effect of this load will be for maximum bending moment, and then accordingly this load divided by this area, we had determined the intensity of the load, and for that the dynamic, so as to account the dynamic effect, the impact factor was also considered, and then the bending moment was determined. हमारे पास ये सब वैल्यूज अवेलेबल है. फिर वॉट एवर इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेट वाज कंसीडर्ड हियर, वॉट एवर इज द बेंडिंग मोमेंट बिकॉज ऑफ द इम्पोज लोड डेट वाज कंसीडर्ड हियर, द लॉस फैक्टर वाज देयर, द पार्शियल ऑफ द एफटीआर एंड एफबीआर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, in compression at transfer, permissible values of stresses in concrete, in compression at working, permissible values of stresses in concrete, in tension at transfer, and the permissible values of stresses in concrete, in tension at working. इसके लिए भी हमारे पास कोड में गाइडलाइंस है, आईआरसी में गाइडलाइंस वेर अवेलेबल. Accordingly, the permissible values of stresses were considered. On the basis of that, the values of FTR and FBR are determined. Whichever of the two is critical, that is the Z required, and that must be greater than or equal to the value of Z provided. We had verified this and it was found safe. So it means that the section is safe in the serviceability limit state. SLS, serviceability limit state. तो यहाँ पर सेफ था, वॉट एवर डायमेंशन प्रोवाइडेड इट वाज सेफ. फिर उसके बाद हमने वेरीफाई किया था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स रिक्वायर्ड. इक्वेशन भी हमको पता है क्या रहना चाहिए. इट इज जेड बी जेड टी, इट इज जेड बी एफ इंफीरियर प्लस जेड टी ए इन ब्रैकेट प्लस जेड टी एफ सुपीरियर डिवाइड बाय जेड बी प्लस जेड टी. ये सब आपको इक्वेशन पता है. यहाँ से हमने एफ सुपीरियर एफ इंफीरियर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल है. Then we had determined the magnitude of pre-stressing force. Then we had determined the corresponding eccentricity from the respective equation. But it was found that the eccentricity was going outside of the section. Then the eccentricity was restricted, and the revised value of pre-stressing force was calculated. Is that right? After this, we had located the safe cable zone where the cable is to be provided. हमने सेफ केबल जोन लोकेट करने के बाद केबल का प्रोफाइल कैसे रहना चाहिए वो भी डिसाइड किया था. देन वी हैड प्रोवाइडेड द केबल. देन वी हैड डिटरमाइंड द फोर्स दैट विल बी कैरीड बाय वन केबल. दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ वन केबल, एंड फोर्स कैरीड बाय वन केबल, एरिया ऑफ वन केबल multiplied by the permissible values of stresses in steel. How much was the area of one cable? The area of one cable मुझे लगता है शायद हमने 7 वायर कंसीडर किया था of 12 mm diameter. Is that right? Multiplied by the initial stresses. बहुत सारे अलग अलग गाइडलाइंस अवेलेबल है. And then we had confirmed that this will be 0.85 times of 0.85 times of FP. एक जगह दिया है 0.7 टाइम्स ऑफ FP, एक जगह दिया है 0.85 टाइम्स ऑफ 0.9 टाइम्स ऑफ FP, एक जगह दिया है 0.85 multiplied of 0.85 times of FP. Then the least of all, this was the least of all, and that was considered, and then accordingly the force carried by one cable was determined. Total force divided by the force to be provided, and we had got the spacing. जितना भी स्पेसिंग आया था हमने उसको थोड़ा सा कम किया था, and that was the spacing provided for the cables. प्रोफाइल हमने ऐसे प्रोवाइड किया था. इट वाज हैविंग द मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी एट सेंटर एंड इट वाज कॉन्सेंट्रिक एट द सपोर्ट. इज दैट राइट? और एक्सेंट्रिसिटी कितना प्रोवाइड करना चाहिए तो उसके लिए भी हमने देखा था कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम द रेनफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड. फिर उसके बाद हमने केबल का डक्ट कहाँ रहना चाहिए था सेंटर से वो भी देखा था फ्रॉम द बॉटम. देन द डायमीटर ऑफ द डक्ट वाज कंसीडर्ड. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी दैट कैन बी प्रोवाइडेड, दैट वाज वर्कड आउट, and then that was provided. Accordingly the revised value of pre-stressing force was calculated.
हमने ये सब फिर कितना प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स एक्चुअली हमने प्रोवाइड किया है, दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, वो हमारा सब एनालिसिस का पार्ट हो गया. देन वी हैड स्टार्टेड विद द डिजाइन, वी हैव वेरीफाइड द सेक्शन. उसके बाद हमने वेरीफाई किया था अल्टीमेट लिमिट स्टेट में, दैट इज फॉर द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ के लिए भी अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है. फॉर डेड लोड एंड फॉर लाइव लोड देयर आर डिफरेंट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स. डेड लोड के लिए हमने दो कॉम्बिनेशन ट्राई किया था. दैट इज दिस व्हेन द 1 meter wide strip was considered from the carriageway width, and this is when the 1 meter wide strip was considered from the footpath. तो दोनों में से जो ज्यादा आता है वो हमने कंसीडर करना चाहिए. मूवमेंट्स वेर ऑल अवेलेबल. Then we had multiplied with the respective gamma factor. The ultimate moment acting was determined, and then the ultimate moment of resistance was determined using IS 1343 APS FPB in bracket D minus 0.42, and it was found that the ultimate moment acting is 525.9, and the ultimate moment of resistance was 849.34, and it was found that it is safe in the limit state of strain और द अल्टीमेट लिमिट स्टेट फ्लेक्चर, इट इज सेफ. उसके बाद हमको चेक करना चाहिए था शेयर के लिए. इज दैट ओके? हमने यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. ओके, हमने प्रॉब्लम यहां तक सॉल्व कर लिया था. अब हम सॉल्व करेंगे शेयर के लिए. अब ये दोनों में से कितना अल्टीमेट शेयर एक्ट होता है. अब आपके पास ये आंसर्स अवेलेबल रहना चाहिए. जब मैंने आपको पहले बताया व्हेन 1 meter wide strip was considered from deck slab, what was the self weight of the deck slab and how much was the shear force. शेयर फोर्स का वैल्यू कितना आया था, हाउ मच वाज द शेयर फोर्स, दैट इज WL/2. ये सब हमारे पास आंसर्स अवेलेबल है. डेड लोड शेयर फोर्स, डेड लोड शेयर फोर्स ड्यू टू डेक स्लैब. विल समवन प्लीज आंसर. यहाँ पर जब हम कैरेज वे विड्थ में से कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर वेरिंग कोड भी रहेगा. दिस इज द वेरिंग कोड सेल्फ वेट एंड डेड लोड शेयर फोर्स ड्यू टू वेरिंग कोड, that is also available. कितना आंसर्स है ये? What are the answers? You must have all these solutions available with you at the time of attending lectures, so that you can keep on giving me the answers, and in reference to that I will solve the problem here. कितना था ये? The deck slab was considered as 0.45 multiplied by 25 was the self weight. It was in terms of kilonewton per meter square. जब हमने 1 मीटर विड्थ कंसीडर किया था, किलोन्यूटन पर मीटर. सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड हियर. दिस इज फॉर द डेक स्लैब. वेरी अच्छा, ओके फाइन, वेरी गुड, थैंक यू नोमान. 50.63, इट वाज 50.63 kilonewton, and because of varying code it was 11.7 kilonewton. Very good. Now when the 1 meter wide strip was considered from the, when the 1 meter wide strip is considered from footpath, तो यहाँ पर जो वेट रहेगा सेल्फ वेट, that will be because of that deck slab plus because of that footpath plus the railing. वेरिंग कोड के ऊपर हमने कितना कर्व का हाइट दिया था, अकॉर्डिंगली जो फुटपाथ रहेगा उसका डेप्थ क्या रहेगा, उसका सेल्फ वेट क्या रहेगा, वो सब हमने कैलकुलेशन पहले के लेक्चर में कर लिया है. ऑल दीज आंसर्स मस्ट बी अवेलेबल विद यू. ओके, व्हेन इट इज फ्रॉम द फुटपाथ इट वाज 100.125. थैंक यू अमित. It is 100.125. So here the shear force was, because now we are solving it for shear, so it is 100.125 kilonewton. Okay, agreed. This is this. अभी देखिए, अच्छा, and what about how much it was because of the live load? लाइव लोड के लिए हमने क्या किया था? If you remember, if say this is the deck slab, a bridge. Now the vehicle was considered close to the support.
such that the dispersion ends at the center of the support. That was considered, and this is how the effect of this load was for this much of span. ये हमने along कंसीडर किया था व्हीकल को, और अक्रॉस के लिए क्या किया था फॉर द शेयर फोर्स. फॉर द शेयर फोर्स, इफ यू रिमेंबर, वी हैड केप्ट द व्हीकल क्लोज टू द सपोर्ट, but obviously at the minimum clearance here जो भी था, and then we had worked out this patch on which the effect of this load will be. It was something like this. So this is the area on which the effect of load will be. ये effective weight calculate करने का फार्मूला आपको याद रहेगा. That was alpha A in bracket 1 minus A divided by L naught plus B1. ये इक्वेशन दिया था, और ये सब कोड में अवेलेबल है. इक्वेशन भी अल्फा क्या लेना चाहिए, ए क्या लेना चाहिए, एल नॉट क्या रहेगा, B1 क्या रहेगा, all those things were available in the code, and those were used, and then accordingly the value of effective weight, after getting effective weight, B effective net was worked out, and that is this B effective net. So this is the along the span, this is across the span. This was the patch on which the effect of this load will be the total load, because the effect of those two concentrated load was getting merged. So the total load divided by the total area, that was the intensity of load. When I consider 1 meter wide strip, that will get converted into kilonewton per meter. Then that was multiplied with the impact factor, and the intensity of load was available. And from this, we have determined the shear force. How much was the maximum of the shear force? That should be at this end left. Left hand it must be. How much that was because of the live load? देखिए, ये पार्ट तो दोनों जगह पर कॉमन है. यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ये और ये दोनों में से जो ग्रेटर रहेगा, डेट वी हैव टू कंसीडर एज द अल्टीमेट शेयर फोर्स एक्टिंग. और जितना अल्टीमेट शेयर फोर्स एक्टिंग आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिजाइन the section, or we have to design the bridge for shear. How much was the shear force? ये भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अच्छा ये अवेलेबल है. The live load shear force was 83.55. So the live load shear force that was equal to 83.55 kilonewton. Is it okay? Now substitute the values here. It is 1.35 multiplied by the shear force because of the deck slab, that is 50.63, plus 1.75 multiplied by the shear force because of the wearing code, that is 11.7, plus 1.5 times of the shear force because of the live load. Live load के लिए कितना है? 83.55. Where do we got all these gamma f, the partial safety factor for loads? ये strength के corresponding, it is 1.35 multiplied by, when all the forces were considered here, it is 100.125 plus 1.5 times of 83.55. So please tell me the answers. Which of the two is greater? 83.55. Thank you, Amir. Thank you, Amir. ये सब हमने पहले सॉल्व कर लिया है. आपके पास ये सब लेक्चर्स अवेलेबल है, आपने रेफर करना चाहिए, नोट्स बनाते रहना चाहिए इन पैरेलल. अगर आप इसको अगर साथ ही साथ नहीं करोगे तो एट द एंड बाद में इतना मुश्किल हो जाएगा कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हम क्या कर दिए हैं. दैट्स व्हाई प्लीज डू इट पैरेलल. नाउ where did we got those values of gamma as the partial safety factor for loads? Those values we had got from IRC 6. अगर आप IRC 6 देखते हो, it is on page number 93. What you will find? Partial safety factor for verification of structural strength. तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं ultimate limit stress. Ultimate, whenever it is ultimate limit state, it means that we are talking with reference to the limit state of strength. So the partial safety factor for verification of structural strength, it is table B2. यहाँ मिलेगी, it is on page number 93 of IRC 6 2017. So it is 1.35, 1.75 and 1.5 is to be considered respectively. There are different combinations. We are taking simple basic combination. When the seismic combination is there, when the accidental combination is there, when we are talking about the basic combination, there are so many different combinations.
And as I have told, we are following only for the dead load, live load and the dynamic effect of dead live load. हम सिर्फ यही इसके लिए solve कर रहे हैं. In addition to this, there are so many other reasons also which are responsible for the load on the structure, but we are not considering all those loads. वो सब लोड के कॉम्बिनेशन यहाँ पर कोड में दिया है. What combination we are using? Then accordingly, what must be the partial safety factor? As you remember, in case of our general RCC structure or steel structure, there are different combinations. If I consider dead and live load only, so it is 1.5 and 1.5. If it is dead, live and wind load together, then it is 1.2, 1.2 and 1.2. If I consider dead and wind only, then it is either 1.5, 1.5 or it is 0.9 and 1.5. राइट. और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वहां पर भी आरसीसी में और स्टील में, बट नॉर्मली दीज आर द स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन विच वी ट्राई. So these are nothing but the value of gamma f, the partial safety factor for load. Similarly, here we are having different partial safety factor for load when we are talking about the strength. और अगर हम सर्विसिबिलिटी में जो पहले सॉल्व किए हैं उसके लिए टेबल कौन सा रेफर करते हैं फॉर सर्विसिबिलिटी? उसके लिए हम रेफर करते हैं टेबल B3, जब वर्किंग लोड एंड अलाउएबल स्ट्रेस हमने सॉल्व किया है. और उसके लिए टेबल 3, इट इज ऑन पेज नंबर 95. वहां पर दिया है 1, 1.2 एंड 1, एंड दैट वी हैड यूज्ड टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देयर. जब हमने सर्विसिबिलिटी वर्किंग लोड एंड अलाउएबल स्ट्रेस के लिए सॉल्व किया था तो वहां पर हमने कंसीडर किया था 1, 1.2 एंड 1. जब ये कंसीडर करेंगे ऑल द लोड दिस डेक स्लैब फुटपाथ, तो यहाँ पर 1 एंड 1 था. Okay. So, how much is the critical shear force? ठीक है. Will someone please answer this? हमको ये पता रहना चाहिए कहां से ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं. Load combinations. Now, which of the shear is maximum? So, I need to determine the ultimate shear force acting. Then I will determine the ultimate shear strength of the section. और जब हम दोनों कंपेयर करेंगे, then we will come to know whether we need to provide any kind of shear reinforcement. Normally, when it is a slab, हमको shear reinforcement का जरूरत नहीं पड़ता है. जैसा जो हमारा सिंपल आरसीसी का भी स्लैब रहता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे, we don't provide any kind of stirrups. हम क्या करते हैं वहां पर 50% ऑफ द बार्स भी बेंड एट द सपोर्ट. उसके लिए दो रीजन रहते हैं. एक तो जो बार बेंड हो जाता है, डेट केयर अबाउट द शेयर, एक तो वो शेयर ले लेता है, दैट इज वन थिंग. सेकंड, जब हम बेंड करके रेनफोर्समेंट को ऊपर लेकर जाते हैं तो सपोर्ट पर नॉर्मली जो निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आने का स्कोप रहता है. सो हमको निगेटिव आएगा, इसका मतलब हॉगिंग होगा. हॉगिंग होगा इसका मतलब वहां पर टॉप में टेंशन रहेगा, तो इसके लिए हमको स्टील में टॉप में चाहिए रहता है. दैट्स व्हाई नियर द सपोर्ट वी बेंड द बार्स. तो स्लैब में शेयर आता नहीं है. स्लैब में हम नॉर्मली हम प्रोवाइड नहीं करते हैं शेयर रेनफोर्समेंट, क्योंकि एक तो या तो वो बेंटेड बार काफी हो जाता है, दैट इज ऑल इनफ. हमको बल्कि कुछ जरूरत ही नहीं रहती है शेयर रेनफोर्समेंट की. बट वी नीड टू वेरीफाई हियर आल्सो, एज इट इज ए डेक स्लैब, it is a bridge, it is a deck slab, it is a one-way slab we are designing. So here also we may not be requiring the shear reinforcement. लेकिन मुझे यहाँ पर वेरीफाई करके प्रूव करना पड़ेगा कि do we really require or we don't require. So I must know how much is the ultimate shear acting. Thank you, Amir. It is 214.15 and 260.5. 214. It is 214.15. And it is 260.5, 260.5 kilonewton. Is it right? Now, which of the two I have to call as the ultimate shear force acting, one which is greater of the two? So I will say that the greater of the two is 260.5. So this is the ultimate shear force acting. So what is the ultimate shear force acting? This is equal to 260.5 kilonewton. Okay. Now I know the ultimate shear acting, and I will determine the ultimate shear resistance. अब मुझे इसका resistance determine करना पड़ेगा. How much shear the section can resist? So please refer IRC 112.
हमको IRC 5, IRC 6, 112 बार बार रेफर करते रहना पड़ेगा. In examination these codes will be allowed. In examination these codes will be allowed. क्योंकि बहुत सारे की इक्वेशन है, बहुत सारे टेबल्स है, बहुत सारे गाइडलाइंस है, इतना याद नहीं रख सकते हैं. So those things will be allowed in the examination. IRCs will be allowed. Please refer. Please refer. मुझे जरा ढूंढने दो कहाँ दिया है. For shear reinforcement, it must be available here. Section 10 of the code, page number 80. Please refer page number 80, section 10 of the code. What is written over there? Page number 80. See, this is the IRC 112. The year of publication is 2011. We are talking about the page number 80. What is it? Ultimate limit state of shear, punching shear and torsion. तो बहुत सारी गाइडलाइन यहाँ पर अवेलेबल है. अल्टीमेट लिमिट स्टेट मैंने पहले बताया, जैसे हम वहां पर करते थे लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी. यहाँ पर ब्रिजेस के लिए ये जो नया IRC दिया, इसने क्या दिया है? सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट SLS, अल्टीमेट लिमिट स्टेट ULS, बस ऐसे चेंज कर दिया है, जिसको हम लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी बोलते थे. यहाँ पर उसने बोल दिया है सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, अल्टीमेट लिमिट स्टेट. So shear, torsion, flexure, axial tension, axial compression, या इनके कॉम्बिनेशन that comes under the head of limit state of strength. तो यहाँ पर ये सब आ जाएंगे अल्टीमेट लिमिट स्टेट में. See here, there is one line. Page number, the line number 3 I am reading on page number 80. Design verification for the shear is carried out at ultimate limit state of strength only. तो अगर शेयर में मुझे वेरीफाई करना है सेक्शन को, तो मुझे अल्टीमेट लिमिट स्टेट में करना चाहिए. उसके लिए क्या दिया है? 10.2 इज द डिजाइन ऑफ फ्लैग्रल मेंबर फॉर शेयर. सो अवर्स इज द फ्लैग्रल मेंबर. ये जो डेक स्लैब है ये फ्लैग्रल मेंबर है. और अगर आप पेज नंबर 81 रीड करते हो, आपके पास ये सब IRCs अवेलेबल रहना चाहिए. नहीं तो मैं यहाँ से रीड करते रहूंगा, आप कुछ रेफर नहीं करोगे. देयर इज नो सेंस इन दैट. इट इज ऑन पेज नंबर 81. इट इज 10.2.2.1 on page number 81. What is given here? Shear design model of members with shear reinforcement. 10.2.2.1 zones of shear design. These elements subjected to bending and significant shear force exhibit three zones as shown in 10.1a, namely uncracked zone, zone A, zone with shear cracks in web without any flagral crack, that is zone B, and zone with the combined flagral and shear crack, that is zone C. तो यहाँ पर 3 सेक्शन बताया है. एक ये है जोन A, यहाँ पर बताया है जोन B, और यहाँ बताया है जोन C, और जोन D भी है यहाँ पर. ये क्या है? इट इज अनक्रैक्ड. देयर आर नो क्रैक्स. मैक्सिमम ऑफ द शेयर विल बी एक्टिंग हियर. हियर इट इज क्रैक्ड इन शेयर, क्योंकि शेयर क्रैक डायगोनल आते हैं. जब ये वर्टिकल रहते हैं तो फ्लैग्रल क्रैक एंड दे गेट इंक्लाइंड, सो दीज आर कॉल्ड एज द फ्लैग्रल शेयर क्रैक. एंड इन जोन C you will see only the flagral cracks. There are 4 kind of zones are possible when the what is given here, it is the shear zone for the flagral member. 4 zones will be there, और उसके रीजन भी वहां पर उसने एक्सप्लेन किया है, और उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए. हाउ टू अवॉइड these cracks, what cares we have to take on, all those things are discussed there. Here we will refer page number 10.2.2.1.
Please refer clause 10.3.2 and it is on page number 88. That extend up to page number 89. What is written here? Element not requiring design shear reinforcement. तो मैंने आपको पहले ही बोला है बीम में नॉर्मली हमको स्टीरअप प्रोवाइड करना पड़ता है, देयर वी प्रोवाइड shear reinforcement. Whereas in case of slab, the thickness is very small, the loads comparatively are small, so here normally we don't require to provide any shear reinforcement. So such kind of element this particular clause deals with. What is it? Elements not requiring design shear reinforcement. It is 10.3.2, right? Elements not requiring design shear reinforcement. Whatever equation given here, V at DC is equal to 0.12 K, this is applicable for RCC section. This is applicable for RCC section. You please refer page number 89. There is third part of this clause. It is on page number 89. What is mentioned here? In pre-stressed single span members. So this is what we are dealing with. In pre-stressed single span members without design shear reinforcement. So this is what we are talking about. It is in pre-stressed, what we are dealing with, the pre-stressed single span elements. That's why we are referring this. What is given here? In this region, the shear resistance is given by, shear resistance is nothing but the shear strength. VRDC is given by IBWC divided by S under root of FCTD square plus or minus K1 sigma CP FCT D. This is the equation given. Is it right? What is it? In pre-stressed single span members, we are talking about the flagrant members. पहले हम आ गए हैं पेज नंबर 80 पर, that deals with the shear. फिर हम आए हैं ऐसे फ्लेक्सिबल मेंबर जहां पर शेयर होता है. सो उसमें आए हैं हम ये क्लॉज पर 10.3.2. फिर उसमें हमको देखना है जहां पर प्री-स्ट्रेस से रिलेटेड डील किया है. सो दैट इज दिस क्लॉज 10.3.2 which is on page number 89 extended up to page number 88 to 89. On page number 89, the third part of that clause that deals with the pre-stress single span elements. The design shear strength or the capacity of the section in shear is given by IBWC divided by S under root of FCTD square plus or minus K1 sigma CP FCTD. अगर ये प्रीस्ट्रेस्ड एलिमेंट है तो यहां पर प्लस ईटा पी साइन थीटा भी होना चाहिए. अगर आपको याद रहेगा, इफ यू रिमेंबर, similar kind of equations already we have used for our conventional or the routine type of pre-stressed concrete element. So as to design the shear strength of the section, VCO is equal to 0.67 BD under root of FT square plus 0.87 FCP FT plus eta P sin of theta. Sin of theta will be equal to theta only because the sin of theta is tan of theta is equal to theta when theta is very small and when it is substituted in radians. We are much familiar with this equation. Already this equation is used in semester 7 for our conventional nature of pre-stressed concrete element. हम ये equation से familiar है. So whatever this equation, it is similar to this. 0.67 BD उसकी जगह पर IBW divided by S आ गया है.
FT FCTD आ गया है प्लस, सो इट इज प्लस और माइनस एंड वी यूज प्लस ओनली क्योंकि दिस माइनस गेट प्लस हियर, क्योंकि ये जो टेंशन रहता है 0.2400 FCK that will be in minus because that is tension, so that minus and this minus of the equation here will get plus, तो यहाँ पर भी हम प्लस ही यूज करेंगे। 0.8 उसकी जगह K1 दिया है, FCP यहाँ सिग्मा CP लिख दिया है, FT उसकी जगह FCTD लिखा है, plus this eta p sin of theta, so that is this here. So this is what the ultimate shear strength of the pre-stressed concrete section when it is subjected to flexure. जो फ्लेक्चर को सब्जेक्टेड है ऐसे pre-stressed concrete member where the shear reinforcement is not required if we want to determine the ultimate shear strength. Shear stress is not where the shear reinforcement is not required. It means that mainly it deals with the big slabs. So ours is the slab. तो हम यहाँ पर verify कर रहे हैं whether it is really not required. So see here what that VRDC is. So as to know the definition for that VRDC, you need to refer here page number 80, page number 85. See here, it is 10.3.1 on page number 85. All these notations are defined. Design method for verification of shear resistance, the following additional notations over those given in section 3 are required. VRDC, the design shear resistance of the member without shear reinforcement. What VRDC is? It is nothing but the design shear resistance, right, of the member without shear reinforcement. Okay, that is what VRDC is. अभी हमको ये सब नोटेशन बहुत सारे, there are too many notations here. मुझे ये सब एक पहले क्या है ये पता रहना चाहिए. Then we will calculate these values, we will put here, we will determine the shear resistance. अगर ये shear resistance shear acting से ज्यादा है, the shear acting is 260. अगर ये resistance shear acting से ज्यादा है, then we say that it is safe. अगर नहीं है तो it is unsafe and we need to redesign the section. हमको फिर section में changes करना पड़ेगा. Now what is that I? Please refer page number 86. Page number 86. Of same IRC 112 we are talking about. What is written here on page number 86? बहुत सारे notations वहां पर दिया है. So one of the notation is here I. Second moment of area of the gross cross section. What is the cross section? What we are talking here about? What is the cross section? The cross section is, we had considered 1 meter wide strip and how much was the depth of this section was considered? 450. Is that right? This is the section we are talking about. Because if it is a deck slabs, then we always design it for 1 meter width and same we provide for the remaining of the width. Is it okay? जैसे हम 1 वे स्लैब में करते हैं, हम 1 मीटर विड्थ के लिए सॉल्व करते हैं और बाकी सेम हम प्रोवाइड कर देते हैं. So it is same here. The width is 1 meter and the depth is equal to 450 meter and I is the gross moment of inertia. So that will be B d cube divided by 12. How much is the moment of inertia of gross cross section? Please keep on giving me the answers. We can proceed only if you give me the answers. Please keep giving the answers. So we have got the value of moment of inertia. What is next? S. S is also defined here. First moment of area between the centroidal axis and the extreme compression fiber about the centroidal axis. So where is the centroidal axis we consider?
at half the depth, because this is a rectangle. This is the area which is subjected to compression. So the first moment of area of the area which is subjected to compression from the extreme compression fiber to the neutral axis, the first moment of area we have to take about the neutral axis here. How will you take the first moment of inertia about the neutral axis for the that compression part? How much is the width? The width is 1000. How much is the depth? Depth is half of 450. So this is equal to 225. So it is 225. This is area. I want to take first moment of that area. So the centroid will be, as it is a rectangle, so centroid will be at half the depth. So it will be 225 divided by 2. So this is nothing but the first moment of area. Right? Please keep calculators available. Please keep on doing the calculation. मुझे calculation बताते रहिए, मैं आंसर यहाँ पर लिखते रहूंगा. क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है, एजम्पशन चेंज होते रहते हैं, क्वेश्चन जो इसलिए पिछले साल के थे वो थोड़े से अलग थे, भी अलग है. आई एवरी टाइम आई टेक सम न्यू क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट तो बहरहाल वही रहता है. तो आपने क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हो तो यू कैन रेफर माय अर्लियर लेक्चर आल्सो, वो भी सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है. लास्ट ईयर जनवरी में तो तुमसे पहले वाला बैच था, उसको भी मैंने पढ़ाया था, ब्रिज. वो लेक्चर भी आप देख सकते हो. यू विल फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स. सो इट इज 7593.75 7593.75 into 10 raised to power 6 mm raised to power 4. Now what about S? 25.31. Okay, it is 25.31 into 10 raised to power 6 and it is mm cube, because it is area and the multiplied by the center of that area, so it is mm cube, first moment of area. So we have got value of I, we have got value of S. Now it is BWC. How to get the value of BWC? ये सब नोटेशन पेज नंबर 86 के ऊपर डिफाइन किया है. प्लीज रेफर पेज नंबर 86. Here you will find BWC. Width of the cross section at the centroidal axis, allowing for the presence of ducts as per equation 10.1.4 and 10.1.5 as applicable. See, हमने क्या किया था, जो केबल प्रोवाइड किया था, द केबल्स वी हैड प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एट मिड स्पैन, बट दे वेर कॉन्सेंट्रिक एट सपोर्ट. ऐसे केबल थे हमारे. द केबल्स वेर प्रोवाइडेड एट द मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी एट मिड स्पैन. दे वेर पैराबोलिक इन नेचर. दे वेर कॉन्सेंट्रिक एट सपोर्ट. तो यहां पर केबल्स होंगे. If I take this as the support section, so here the cables are. What was the spacing of the cable? What was the spacing of the cable? What was the spacing of the cable? At what distance the cables were provided? अगर आपको याद रहेगा हमने क्या किया था पहले, कितना प्रेस्टेजिंग, कितना एक्सेंट्रिसिटी चाहिए, कितना प्रेस्टेजिंग फोर्स चाहिए, फिर एक्सेंट्रिसिटी को रिस्ट्रिक्ट किया, फिर प्रेस्टेजिंग फोर्स कैलकुलेट किया. Then area carried by the one cable, then we had provided the force carried by one cable, then the number of cables required or the spacing of the cable was decided. How much was the spacing of the cables? तो मुझे समझ में आएगा कि 1 मीटर वाइड में कितने केबल्स जा रहे हैं या कितना एरिया मुझे माइनस करना है. If I have to subtract that, how much was the spacing of the cables? 390 mm. Okay, fine. So this spacing was 390 mm and the cables were concentric. Is it okay? हमने ऐसे प्रोवाइड किया था. Very good. Now how to get the value of BWC? क्या करना चाहिए BWC के लिए? Are you referring the code? प्लीज रेफर IRC 86. मैंने पहले बोला आपके पास ये सब IRC अवेलेबल रहने चाहिए. मैं सिर्फ यहाँ से कितना भी चिल्ला सकता हूँ आपको.
ये कोड अवेलेबल रहना चाहिए। अगर आपके पास है तो इट इज गुड, नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। So this says that the width of the cross section at the centroidal axis allowing for the presence of the ducts as per equation 10.1.4 और 10.1.5। तो मुझे यहां से जितना भी width है उसमें से ये डक्ट माइनस करना पड़ेगा। How much will be the ducts? तो कितने डक्ट रहेंगे अगर मुझे देखना है, तो इट विल बी 1000 divided by 390 and I will get the number of ducts। फ्रैक्शन में आएंगे तो हम फ्रैक्शन में कंसीडर करेंगे कि उतना पार्ट भी कट रहा है, लाइक दैट। सो हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ डक्ट्स? 1000 डिवाइडेड बाय 390, 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। कितने डक्ट आएंगे? 2.564, फाइन, 2.564। इसका मतलब एक डक्ट ऐसे रहेगा यहां, तो दूसरा डक्ट ऐसे कुछ तो भी ऐसे रहेगा, एक डक्ट यहां रहेगा। सो दिस इज हाउ इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.564 नंबर ऑफ डक्ट्स। नाउ वी नीड टू रेफर equation, which equations? 10.14 and 10.15 to know exactly how to consider the deduction. So where are these equations available? 10.14 and 10.15. 10.14 and 10.15. These equations are available on page number 92 of the IRC 2112. See here, where the web containing the grouted duct with diameter theta, that should be 5, greater than BW by 8, the shear resistance VRD max should be calculated on the basis of the nominal web thickness given by। अगर phi का वैल्यू ग्रेटर देन BW by 8 है तो हमको डिडक्शन कंसीडर करना है, राइट? When we will be consider the deduction, if the diameter of the duct is greater than BW by 8, then only we need to consider the deduction। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, we need not to make any kind of deduction। This condition has to be satisfied so as to consider the deduction। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, then we need not to consider any deduction। We consider that the whatever is the entire width that we consider in the calculation। What is phi? The diameter of the duct। How much was the diameter of duct? If you remember, हमने शायद 50 mm कंसिडर किया था, 50 mm। अभी देखिए BW by 8 कितना है? BW by 8, BW the width of web। नॉर्मली अगर ये कोई फ्लैंज सेक्शन रहता है तो दिस वी कंसिडर द विड्थ ऑफ वेब। अगर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो वॉट एवर द विड्थ दैट इंटायर वी कंसिडर एज द वैल्यू ऑफ BW। So for our case, as it is 1 meter, so we will consider BW as equal to 1000 divided by 8। 1000 divided by 8 कितना हो जाएगा? 125। Is it right? What is given here? Where the web content grouted duct with a diameter this by 8, the shear resistance should be calculated on the basis of nominal web thickness। BW by 8, तो कितना है BW by 8? अच्छा BW, लेकिन हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर तो कोई एक डक्ट नहीं है। फॉर दिस 100,000 मीटर वी आर हैविंग सो मेनी डक्ट्स। अगर ये डक्ट का हम लेफ्ट कंसीडर करते हैं, ये डक्ट का हम राइट कंसीडर करते हैं, सो हाउ मच दिस डिस्टेंस इज 390। अगर मैं ये देखता हूं कि फाइ देखना है तो मुझे ये 390 के हिसाब से देखना पड़ेगा। सो दिस विल बी 390 डिवाइडेड बाय 8। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये मैंने क्या बोला है? क्योंकि अगर मैं पूरा BW कंसीडर करता हूं तो सो मेनी डक्ट्स आर देयर।
लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ बात करना पड़ेगा एक डक्ट के लिए। अगर एक डक्ट कहां से रहेगा, उसका BW/8 कितना आ रहा है फॉर वन डक्ट। सो BW मैंने ये डक्ट का हाफ लेफ्ट हाफ राइट कंसीडर किया, सो दिस इज 390, सो इट इज 390 डिवाइड बाय 8। कितना आता है ये आंसर? हाउ मच इज आंसर इज 8 चौक 32। कितना बच गया? 7 70 8 64 6 60 8 7 56 4 5। So this 50 is greater than 48.75 and we have to consider the deduction. Is it right? I am talking about the diameter of one duct, so I have to consider what is the influence area for or the influence width for one duct. एक डक्ट के लिए इन्फ्लुएंस फील्ड इतना है, हाफ टू द राइट एंड हाफ टू द लेफ्ट, so that is 390. So it is 390 divided by 8 and I have got that is equal to 48.75 and the diameter of the duct is 50. थोड़ा ज्यादा आ गया है। अगर नहीं आता तो in that case we need not to consider any deduction. But here as I am getting the diameter of the duct more than BW/8, then I have to make the deductions. Thank you, Amit. Thank you, Noma. So I have to make the deductions. अब डिडक्शन कैसे कंसीडर करना चाहिए? तो फॉर दैट हियर आर द गाइडलाइंस. व्हाट इज वन? BWNO nominal, that is nothing but this BWC will be equal to BW minus 0.5 summation of diameters. ये कब है? Where phi is the outer diameter of the duct and sigma phi is the is determined for the most unfavorable level. This is for the grouted duct. Grouted duct के लिए BW normal is equal to the metal duct grouted, where phi is less than BW divided by 8. अगर phi less than BW divided by 8 है तो हमको क्या करना है? BW normal is equal to nominal is equal to BW. That is what we have to consider. For grouted metal duct, this is for grouted metal duct. फिर क्या देता है? For non-grouted duct. For non-grouted duct and unbonded tendons यहां पर दूसरी इक्वेशन दिया है BW nominal is equal to BW minus 1.2 sigma phi. There are two conditions. पहला ये है when phi is greater than this. फिर दूसरा क्या दिया है? When phi is less than BW divided by 8, BW nominal is equal to this. So in all there are three things. एक बार ये रहेगा, एक बार ये रहेगा, एक बार ये रहेगा. Out of these three, which we have to consider? ये कब है? When it is grouted metal duct and phi is less than BW by 8, then consider this. But our is the case when phi is greater than BW by 8. If it is a metal duct, this is again for the metal duct. Then consider this. This is the equation when it is ungrouted, when it is a plastic duct. अगर प्लास्टिक का हमने डक्ट प्रोवाइड किया, अगर हमने ग्राउट नहीं किया, अगर केबल्स अनबाउंडेड है, then consider greater reduction. But our is the case when we are considering that. Assume नहीं है तो हम assume करेंगे. What we will assume? Say we are providing metal duct and say we are properly grouting it. We are grouting the cables. Assume metal duct.
ग्राउटेड बॉन्डेड केबल, अगर ये कंडीशन रहेगा और जब फाई ग्रेटर देन BW/8 रहेगा, देन द इक्वेशन इज BW minus 0.5 summation of phi. This is the equation for BW nominal. That is nothing but BWC. We will keep on calculating the unknowns here one by one, so as to get the shear resistance, the design shear resistance, the shear resistance of the section IBW upon C. I हमने कैलकुलेट किया, S हमने कैलकुलेट किया. Now BWC. BWC is what? The effective width of the section. कहां पर? At the neutral axis, where the duct is provided, where it is more critical. कितना रहेगा? उसके लिए बोलता है कैलकुलेशन करना है तो हमको डिडक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. फिर कोड क्या बोलता है? डिडक्शन कब कंसीडर करना पड़ेगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिडक्शन करना पड़ेगा. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो कीजिए डिडक्शन, नहीं होती है तो डोंट कंसीडर. तो हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा. अगर ये कंसीडर करना है तो फिर अगर मेटल डक्ट है और ग्राउटेड है तो ये रहेगा. अगर प्लास्टिक डक्ट है, अनग्राउटेड है, अनबॉन्डेड है तो ये इक्वेशन रहेगा. So ours is the metal duct we are assuming, let it is grouted and it is properly bonded, then this is the equation. So the width of this section is now 1000 mm. I will consider entire minus 0.5, and how many diameters will be there? 2.564. It is 2.564 and the diameter was, so 2.565. These are the number of diameters. Multiplied by 50 mm is the diameter of that duct, and this is getting multiplied by 0.5 of that equation, and I will get the effective width IBWC. So keep on calculating the values. I 7593.75 into 10 raised to power 6. The value of S is equal to 25.31 into 10 raised to power 6. BWC is equal to, what is the value of BWC? How much is the effective width available at the critical section? Where is the section critical? When it is passing from the neutral axis, where the ducts are, the effective width available will be less. That much of width will get subtracted. Subtract भी कब करना है? जब वो डायमीटर का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. If phi is greater than BW/8, then only we have to consider that subtraction. अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है, if the diameter of duct is less, तो फिर उस केस में हमको ये सब्ट्रैक्शन करने का जरूरत नहीं है. The entire width will be effectively available. But here, as it was satisfying the requirement, that's why we have to make subtraction. So the effective width available is 935.9. Okay, thank you. So it is 935.9 mm. Mm cube, mm raised to power 4. Okay, fine, done. So we will keep on determining the required unknowns one by one. हमने 3 वैल्यूज तो डिटरमाइन कर लिए हैं. अभी क्या चाहिए आपको नेक्स्ट? व्हाट यू रिक्वायर इज द वैल्यू ऑफ FCTD. हम ये पहली बार प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफिकल्ट है या बहुत लेंदी सॉल्यूशन है, लेकिन ऐसे नहीं है. क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो with the parallel solving the problem, in parallel we are learning too many things, we are discussing too many things. That's why it is taking time. अदरवाइज ये इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने के लिए. जिसके पास कंसेप्ट है, उसको पता है कौन से वैल्यूज इक्वेशंस कहां से लेना है, तो वो बहुत फास्ट सॉल्व कर सकता है. बिकॉज वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट टाइम. तो पहले तो व्हीकल क्या है, कैसे रखा है, व्हीकल को अरेंज कैसे करना है, कौन कौन से ब्रिज के कंपोनेंट है, लोड कहाँ एक्ट हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कितना मूवमेंट है, कितना शेयर फोर्स है, इसको कैसे वेरीफाई करना चाहिए, वर्किंग लोड एंड अलाउएबल स्ट्रेस मेथड से सेक्शन का सुटेबिलिटी, फिर प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कितना लगेगा, एक्सेंट्रिसिटी क्या रहेगी, एक्सेंट्रिसिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या प्रोवाइड करने के लिए, इफ नॉट पॉसिबल रिस्ट्रिक्ट, रिवाइज द वैल्यू ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स,
Then you see that the cable, how the cable profile is to be decided, कितना प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स है, कैसे केबल रखना है हमको, व्हाट आर द वर्टिकल लिमिट्स विथिन विच द केबल मस्ट बी एट द सेफ केबल जोन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक केबल कितना कैरी कर रहा है, केबल का स्पेसिंग कितना रहना चाहिए। उसके बाद फिर हमने इसको फ्लैक्चर के लिए चेक किया, फिर अभी हम शेयर के लिए चेक कर रहे हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत रूटीन स्टेप्स है जो हमने पहले भी किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़े से गाइडलाइंस डिफरेंट है, यहाँ पर इक्वेशंस डिफरेंट है। ओके, हमने सेमेस्टर 7 में भी ये सब किया था ट्विस्टेड कंक्रीट में। ओके फाइन। सो नाउ द वैल्यू ऑफ एफसीटी डी, where we can have the value of FCTD. For this equation FCTD, you have to refer another guidelines. हम कहाँ चल रहे थे? पेज नंबर 80, FCTD क्या चीज है? What is this FCTD? See, now the differential is given here on page number 87. Please refer page number 87. For this is available on page number 87. All notations are defined here. What is this FCTD? Design value of concrete tensile strength, FCTK. This is equal to FCTK divided by gamma m. Okay. अब ये कहां से लेंगे हम? What is this FCTK? What is this gamma m? हमको ये पता रहना चाहिए. This is the design value of concrete tensile strength, right? FCTD. इसके लिए हमको रेफर करना पड़ेगा पेज नंबर 38. Please refer page number 38 of the code. What is there on page number 38? Please refer page number 38 of the code. Please refer page number 38. There is table 6.5. This table 6.5. It is on page number 38. Who will read the title of the table? What is the title of the table? What is the title of table on page number 38? What is the title of the table on page number 38? It is table 6.5. Here it is, table 6.5. Stresses and deformation characteristics for normal concrete. Strength classes for concrete. M15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. So for every interval of 5 mm characteristic strength, the properties of the concrete are given. Stress and deformation characteristics for normal concrete. Strength classes for concrete. See, what is the very first line? Strength class. अलग अलग ग्रेड्स है, M15 से लेकर M19 तक, with an increase of 5 PA. Then FCK. FCK हमको पता है. What is FCK? The characteristic compressive strength of concrete. फिर FCM, FCTM, FCTK. यहाँ क्या चाहिए मुझे? FCTD. How I can get the value of FCTD? FCTD is equal to FCTK divided by gamma m. It is defined on page number 87. It is the design tensile strength of concrete. Design tensile strength of concrete. Where we can get this? From page number 87. ये वहां पर इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल दिया है. अब FCTK कहां से मिलेगा? टेबल 6.5, पेज नंबर 38. So this is page number 38. This is the table. Now FCTK, you have to refer FCTK, which is corresponding to 0.05 fraction. क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह डिफाइन करते हैं, we define with the 95% of the probability, not more than 5% of the test samples to fall below the expected value. So it is corresponding to that FCTK 0.05 fraction. Corresponding to what was the grade of concrete we had used?
What was the grade of concrete? FCK कितना था हमारा? 60 MPa. FCI was 50 MPa. So now, corresponding to this M60 grade of concrete, what is the value of FCTK 0.05 MPa? Who will answer? What is the value of FCTK 0.05? That is fraction for M60 grade of concrete. What is the value? How much is FCTK? ये सब डिफाइन किया है. All these definitions are there. कितना है वैल्यू FCTK? 2.8. You are right, Amir. Thank you. चलिए, कम से कम साला एक आदमी तो रेफर कर रहा है, मैं इतना अज्यूम कर सकता हूँ. आई डोंट नो अबाउट द अदर्स. रेफर कीजिए बच्चों. मैं यहां से सिर्फ तुमको समझा सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. आई कैन इंसिस्ट ना, ये यूज करना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है. सो दिस वैल्यू इज 2.8. नाउ व्हाट इज दिस गामा एम? गामा एम क्या है? गामा एम के लिए you need to refer a diagram. This is available a figure. This is available on page number 49. Please refer figure 6.5. It is available on page number 49. अगर आप ये सब पेज नंबर, टेबल नंबर, फिगर नंबर, क्लॉज नंबर अगर ये सब नहीं लिखोगे तो आपको खुद 15 दिन के बाद समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहां से क्या ले लिया था. मैं खुद भूल जाता हूं कि ये वैल्यू कहां से आ रही है, कहां ढूंढना पड़ेगा. सो आई ऑल्सो नीड टू कंटिन्यूअसली एनालाइज द थिंग्स कि कौन सा वैल्यू कहां से मिल रहा है. सी रेफर हियर. दिस इज द फिगर. फिगर 6.5 पैराबोलिक रेक्टेंगुलर डायग्राम फॉर द कंक्रीट इनकॉर्पोरेशन फॉर द डिजाइन ऑफ सेक्शन. सी वो जो हम आरसीसी में या प्रीस्ट्रेस में नॉर्मली यूज करते हैं, इट इज द सेम थिंग. व्हाट इज इट? ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रहता है. Is it right? This is stress and here is the strain. यहां तक हम कितना बोलते हैं? When it is parabolic, when it is parabolic, we consider that this is equal to 0.002 strain. और जब यहां पर ये रेक्टेंगल जहां तक जाता है अल्टीमेट, it is 0.0035. It is the same thing here. यहां पर भी रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक कंसीडर करना है. See, up to here it is FCK. Then what? यहां पर क्या दिया है? FCD. और ये FCD के लिए क्या दिया है? देखिए, FCD इज इक्वल टू अल्फा FCK डिवाइड बाय गामा M. व्हाट इज अल्फा? अगर आपको याद रहेगा, नॉर्मल हमारा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर रहता है या जो ट्विस्टेड कंक्रीट का रहता है, वहां पे भी क्या करते हैं? हाउ मच वी कंसीडर अल्टीमेट स्ट्रेन. अगर आपको याद रहेगा ऐसे वी कंसीडर यहाँ पर 0.446 और 0.45 FCK हम ऐसे कंसीडर करते हैं. Where did we get this value from? यही से मिलता है. अगर आपको याद रहेगा हम ऐसे कंसीडर करते हैं, दिस इज FCK. फिर हम बोलते हैं कि इसको ऐसे कंसीडर करना चाहिए फॉर द डिजाइन पर्पस. हम इतना कंसीडर नहीं करते हैं स्ट्रेसेस. वी अज्यूम दैट इट विल बी ओनली 0.67 टाइम्स ऑफ FCK. फिर हम बोलते हैं कि इसको फर्दर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अप्लाई कीजिए. When you will apply, this will be 0.67 FCK divided by gamma M. This is the design strength. तो लास्ट का ये जो 0.67 FCK और gamma M for concrete we consider as 1.1. 0.67 divided by 1.1, that will be either 0.446 या कुछ लोग इसको 0.45 FCK लिखते हैं. That is this. और ये डायग्राम को हम ऐसे घुमा देते हैं जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम स्केच करते हैं. It is the same thing here. Here also the value of Fy alpha is given as 0.67. जैसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं फॉर नॉर्मल आरसीसी एंड प्रीस्ट्रेस सेक्शन. इट इज सेम फॉर द ब्रिजेस. इट इज द सेम कंसेप्ट. 0.67 FCK डिवाइड बाय गामा M. तो यहाँ पर भी हमने अल्फा FCK डिवाइड बाय गामा M. व्हाट इज दैट गामा M? द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल. एंड यू सी हियर द गामा M इज डिफाइंड. अल्फा इज 0.67, gamma M 1.5 for the basic and seismic combination, 1.2 for the accidental combination. As I have told you earlier, there are so many different combinations possible, but we are solving problem for the very basic combination when the dead, live and only the impact effect is considered.
So here for the basic combination, the value of gamma m is to be considered as 1.5. Seismic के लिए भी 1.5 है, but for accidental it is 1.2. So it means that the value of gamma m is to be considered as equal to 1.5. This is from this figure 6.5 on page number 49. Is it okay? Thank you, Noman. You are also right. So gamma m is equal to 1.5. If I know these two values, I can get the value of FCTD. So this will be equal to 2.8 divided by 1.5. कितना रहेगा? How much it will be? कौन सा वैल्यू कहां से ले रहे हैं हमको पता रहना चाहिए. जब हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हमको सब इतना बहुत सारा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस हो जाती है हमको. वी गेट प्रैक्टिस बाय दैट टाइम. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हमको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, वेयर आर वी गेटिंग द वैल्यूज फ्रॉम. सो हाउ मच दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1.8667. I will write 1.87. Okay, fine. So the value of FCTD is equal to 1.87 MPa. Okay. Now we will move to the next unknown. ये इक्वेशन में जितने अननोन्स है ये सब हम डिटरमाइन करेंगे और यहां पर रख करेंगे. देयर आर टू मेनी अननोन्स. पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया किया ऑफ द कंप्रेशन पार्ट, then B the effective width कितना अवेलेबल है, then now we have calculated the ultimate design tensile strength, the design tensile strength, the tensile strength of the concrete. जो वहां पर हम FT लेते थे, अगर आपको याद रहेगा नॉर्मल प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सेक्शंस के लिए, that is the principal tensile stress is permitted, it is 0.24 times of FC. वहां पर हम ऐसे लेते थे, principal tensile stress is permitted. यहाँ पर हमको ऐसे कैलकुलेट करना है. What is next now? अब FCTD तो यहाँ पर अवेलेबल है. ओनली आई हैव रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ K1. देन आई रिक्वायर द वैल्यू ऑफ सिग्मा CP. अगर ये दो वैल्यू मिल जाता है देन वी हैव डन विद दिस इक्वेशन. और ये ईटा P sin थीटा तो हमको ऑलरेडी पता है पहले से वो क्या होता है, एंड वी कैन गेट द रिक्वायर्ड अननोन. वी कैन डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ. ओके. सो व्हाट इज K1? K1 इज आल्सो डिफाइंड. सी ये सब चीजें यहाँ पर डिफाइंड है. हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा इक्वेशंस कहां दिया है. हम चल रहे थे सेक्शन 10 में जहां पर शेयर से रिलेटेड है. सेक्शन 10 ऑफ द कोड दैट डील्स विद द शेयर. वो इक्वेशन हमको वही मिला था, सब नोटेशन भी वहीं पर डिफाइन किया है. प्लीज मूव टू पेज नंबर के. अच्छा के कहां है, K1 कहां है, वेयर इज दैट K1? मुझे K1 देख लेने दीजिए. लेट अस सी K1 हाँ K1. ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में जो K1 डिफाइन किया है, सी क्या बोलता है यहाँ पर. अगर आप ये इक्वेशन देखते हो, VRDC is equal to IBW divided by S under root of FCTD square plus or minus K1 sigma CP FCTD. ये सब क्या लिखा है उसके नीचे? where notations are as per 10.3.1. तो मुझे नोटेशन सब 10.3.1 में ढूंढना पड़ेगा. 10.3.1 में सब नोटेशन ढूंढना पड़ेगा. तो इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 87. दिस नोटेशन इज डिफाइंड. व्हाट इज K1? LW divided by LPT2 less than or equal to 1 for pre-tension tendons. अगर pre-tension tendon है तो फिर ये इक्वेशन देखना है. For other types of pre-stressing, K1 is equal to 1. क्योंकि pre-tension में कुछ transmission length रहता है, तो that is with reference to that the transmission length and all. लेकिन यहाँ पर कोई transmission length नहीं रहता है. So for pre-tension members of the tendons, equation दिया है. For other types of pre-stressing, it is K1. So ours is the other types, क्योंकि हमारा post-tension है. As ours is the post-tension deck slab bridge, that's why the value of K1 is considered as 1. It is available on page number 87. Done. So we have got the value of K1. What is next? Sigma CP. Sigma CP is defined here. Is the mean compressive stress measured positive in the concrete due to the design axial force. This should be obtained by averaging it over the concrete section taking account of the reinforcement. Okay, fine. ये क्या रहेगा? It is eta P by E. That's all.
the axial compressive stress which is acting. जैसे हम मैंने पहले बोला था, दिस इक्वेशन इज एनालॉगस टू दैट इक्वेशन 0.67 BD अंडर रूट ऑफ FT स्क्वायर प्लस 0.8 FCP FT. ये 0.67 BD, that is this part. FT, that is this part. 0.8, that is this cable. FCP, that is this sigma P. FT, that is this. It is analogous to that. So FCP क्या रहता है, eta P by S. So it is the same thing here. Sigma CP, that is nothing but eta P by S, the axial compressive stress. How much was the loss factor considered? 0.8. And how much was the total pre-stressing force provided for 1 meter width? Is it this? 2346.13. So it will be 2346.13 into 10 raised to power 3. This was the provided. Is it right? Divided by, है ना, हमने इतने प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड किया था. एरिया इज 1000 multiplied by the depth is 450. So get the value of sigma CP. 1 point. हाँ, is it right कि हमने इतना ही प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स प्रोवाइड किया था? Will someone please confirm this? 2346.13. That was the area of pre-stressing steel provided. That was the area of pre-stressing force provided. So it is eta P by A. इसके लिए कैसे है कि आपके पास सब पिछले नोट्स अवेलेबल रहना चाहिए, वही वैल्यूज हमको 50 बार जरूरत पड़ती रहती है. ओके फाइन, थैंक यू. So it is 4.172. So it is 4.172 MPa. So the value of K1 is 1, value of sigma CP is equal to 4.172. Done. So we have got all the required values. Now we can get the design shear strength of section VRDC. I 7593.75 into 10 raised to power 6. BWC 935.9 divided by S, that will be go to 25.31 into 10 raised to power 6 under root of FCT, that is equal to 1.87 square plus K1 into sigma CP into FCTD 1.87 plus eta P 2346.13 into 10 raised to power 3 into sin of theta will be tan of theta is approximately equal to theta when it is substituted in radians. So how much that theta is? The cable is parabolic. It was concentric and it was having the maximum eccentricity at the center. So this is the right, because this is the cable. The vertical component of this will balance a part of the reaction. That's why we are considering that. That will improve the strength of the section. क्योंकि जितना रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है. If this angle is theta, this is also theta. So if this force is P, then we write this as equal to P sin of theta. That is equal to P tan of theta is equal to P theta, and that will be equal to 4H by L क्योंकि ये पैराबोलिक है. So this is H and this is L. So how much is this? 0.8, because that is the loss factor eta. P is this into theta will be 4H. What is H? How much is height? How much was the maximum eccentricity considered? Divided by the L. L कितना 9 मीटर स्पैन था मुझे लगता है. 4H by L. How much is the eccentricity provided?
हमने एक्सेंट्रिसिटी कितना प्रोवाइड किया था? One 25. Okay, fine. This was 125 mm. So this is 125. Please solve this. ये कंट्रीब्यूशन है प्लस ये केबल का वर्टिकल कंपोनेंट है. Get the total. That is the ultimate shear resistance of the section where without shear reinforcement. Without shear reinforcement. This is the ultimate shear resistance of the section because of pre-stressing. When it is a pre-stress section, क्योंकि हमने देखा था वहां पर एक आरसीसी के लिए भी इक्वेशन दिया है, हमने वो यूज नहीं किया. दिस इज फॉर द प्री-स्ट्रेस कंक्रीट, सो वी हैव यूज्ड दिस. हमने शेयर के लिए ये इक्वेशन इसीलिए दिया है क्योंकि उसने वहां पर बताया है फॉर द प्री-स्ट्रेस सिंगल स्पैन एलिमेंट दिस इज द कंडीशन. Otherwise, we are having another condition also for the shear, but that is for RCC sections. So what is the shear resistance of the section? How much shear this section can carry? ये सब लेक्चर्स आप बाद में रेफर कर सकते हो, नोट्स बनाना चाहिए, पैरेलल में आईआरसी वगैरह रेफर करते रहना चाहिए. मेरे लास्ट ईयर के लेक्चर भी यूट्यूब पर अवेलेबल है ना. सेम इज द लिंक. आपको डेट देखना पड़ेगा, वो पिछले साल की जनवरी वगैरह के रहेंगे. तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, लेकिन डेटा वगैरह वहां पर चेंज होते रहेगा. हर टाइम में कुछ तो नया थोड़ा बहुत ये वो चेंजेस करके सॉल्व करते रहते हैं. So you can refer those questions also, then you will get some different data. That's all. Plus or minus. So we have considered only plus क्योंकि मैंने बताया है कि that minus and minus will get become positive. That's why we had considered that plus. We had considered that plus because क्योंकि ये जो वैल्यू है 1.87, ये वैल्यू निगेटिव में आता है. सो डेट माइनस और वो फार्मूले का जो माइनस रहता है, डेट माइनस दिस माइनस विल गेट मल्टीप्लाइड एंड इट विल बिकम पॉजिटिव. ये हमने पिछले सेमेस्टर में भी सॉल्व किया था और वहां पर भी बोले थे कि रादर यूजिंग माइनस दैट वैल्यू इज टू बी यूज्ड विद पॉजिटिव. सो इट इज सेम एज दैट, इट इज द सेम थिंग. 1047.06. So it is 1047.06 kilonewton and it is more than 260.5 kilonewton because this is the ultimate shear acting. This is the resistance, so it is safe. We need not to provide any shear reinforcement. बीम में हमको प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है then also we provide certain nominal. That is for the ductility requirement. बीम में भी हमको ऐसे वेरीफाई करना पड़ेगा if it is a pre-stressed concrete beam और girder we need to verify. वहां पर अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो we provide the shear reinforcement. अगर रिक्वायर्ड नहीं भी रहेगा then also we provide certain nominal for the ductility purpose. I hope that you must have understood how to determine the shear acting ultimate and the shear resistance and then how to compare the two. Now the next part is what we do here. We provide lot of supplementary reinforcement. If it is a pre-stressed concrete section, it doesn't mean that it is only concrete and the pre-stressing steel. वहां पर बहुत सारा अनटेंशनड स्टील भी रहता है, बहुत सारा अनटेंशनड स्टील भी रहता है. जैसे अगर आपको याद रहेगा इन सेमेस्टर 7 इन द इलेक्टिव प्री-स्ट्रेस कंक्रीट हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डिजाइन किए थे एंड देयर आल्सो वी प्रोवाइड द नॉमिनल रेनफोर्समेंट, अनटेंशन रेनफोर्समेंट और द सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट. सिमिलरली हियर इन ब्रिजेस वी नीड टू प्रोवाइड. सी अगर ये ऐसे सेक्शन है
मुझे यहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो डॉट दिख रहा है, दीज आर द रेनफोर्समेंट बार विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पैन। उसके ऊपर रहेगा ये विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द कैरेज वे विड्थ अक्रॉस द स्पैन, अलोंग द स्पैन, अक्रॉस द स्पैन। पहले ये रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग। जो उसका स्पैन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, तो उसको ज्यादा टेंशन मिलेगा। तो उसके लिए पहले वो नीचे रखा है, सो दैट आई विल गेट द ग्रेटर लीवर आर्म। अगर कोई टू वे स्लैब रहता है, अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने कोई टू वे स्लैब डिजाइन किया है, से दिस इज 3 मीटर, सपोज इट इज 5 मीटर, से वी आर हैविंग बीम्स ऑन ऑल द साइड्स, देन इट विल बी ए टू वे स्लैब। इसमें हम क्या करते हैं, पहले स्टील हम शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में रखते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट इज गोइंग टू गेट डिफ्लेक्ट मोर, उसमें ज्यादा मूवमेंट आने वाला है। देन वी प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन। अगर मैं यहां से क्रॉस सेक्शन देखता हूं तो मुझे स्टील ऐसे दिखेगा, ये स्लैब में पहले ये रहेगा विच इज पैरेलल टू दिस शॉर्टर, फिर ये रहेगा स्टील। इन केस ऑफ टू वे स्लैब व्हेन इट इज बॉन्डेड फ्रॉम ऑल द साइड, अगर मैं यहां सेक्शन लेता हूं ये स्लैब का, तो मुझे पहले कौन से स्टील दिखेंगे, ये जो रहेंगे, ये जो शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन के, तो पहले वो दिखेंगे। फिर उसके बाद ये लॉन्गर रखा है, तो ये लॉन्गर मुझे उसके ऊपर दिखेंगे ऐसे, पहले ये डॉट दिखेंगे नीचे। वाई? क्योंकि मुझे इसको ज्यादा लीवर आर्म चाहिए, मूवमेंट ज्यादा आने वाला है। ये जो शॉर्टर स्पैन के लॉन्गर स्पैन के पैरेलल है, यहाँ पर मूवमेंट कम आने वाला है, तो उसके लिए लीवर आर्म कम चाहिए, चलेगा। लेकिन हमारा जो स्लैब है यहाँ पर, इट इज ए वन वे स्लैब। दिस इज ए वन वे स्लैब, इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, जो स्पैन का डायरेक्शन में, उसमें हमको पहला रेनफोर्समेंट रखना पड़ेगा। सो द रेनफोर्समेंट वी विल प्रोवाइड हियर। लेकिन ऐसे नहीं कि हम दूसरे डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं करेंगे, सो एज टू टेक केयर ऑफ द श्रिंकेज, एनी एक्सीडेंटल लोड because of temperature, some stresses may develop in other direction also, and that may be responsible for the crack. To arrest those cracks, we need to provide certain distribution steel also. So we provide steel in other direction also. तो यहाँ पर जो रहेगा पहले नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन, सो दोज आर दीज बार्स। फिर जो दूसरा डायरेक्शन है उसमें भी रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। हालांकि वॉट एवर स्टील वी आर प्रोवाइडिंग हियर, दिस टोटल इंटायर नेट, it is not supposed to carry any tension. Why it is not supposed to carry any tension? क्योंकि मैंने इसको पहले ही अनटेंशन स्टील, सप्लीमेंट्री स्टील, एडिशनल स्टील, नॉमिनल स्टील ऐसे बोला है। दिस इज सप्लीमेंट्री, इट इज सेकेंडरी, इट इज नॉट सपोज्ड टू कैरी द टेंशन। व्हाई? बिकॉज द एंटायर टेंशन इज सपोज्ड टू बी कैरीड बाय द प्रीस्ट्रेसिंग केबल्स। इट इज ए प्रीस्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन। हमने पहले बोल दिया जितने भी टेंशन है वो सब केबल लेने वाला है। But so as to keep the section in shape, because of any accidental reason, if some load acts, because of temperature, because of shrinkage, हमको वहां पर अरेस्ट करना पड़ेगा अगर कभी कोई क्रैक डेवलप हो जाता है तो। That's why we need to provide the minimum supplementary steel. It is one of the main reason to improve the ductility. अगर मैंने रेनफोर्समेंट को बहुत कम क्रैक दिया, बहुत कम कवर दिया, तो भी कवर क्रैक हो जाएगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा दिया तो स्ट्रेसेस विल नॉट गेट ट्रांसफर, है ना। तो मुझे एक ऑप्टिमम कवर देना पड़ता है स्टील को। सो आई नीड टू प्रोवाइड स्टील, देने तो सिर्फ कंक्रीट का सेक्शन हो जाएगा एंड दैट में गेट क्रैक इजीली। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सो वी प्रोवाइड टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, so as to take care of any accidental loads which may act, so as to arrest the cracks if they are developing because of shrinkage, temperature, etc. So for that reason we need to provide a reinforcement net in the bottom. So this is the reinforcement net I am talking about in the bottom, right? और जो नेट हम बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, एक नेट हम यहाँ पर टॉप में भी प्रोवाइड करेंगे सेम। यहाँ पर भी हम एक सेम नेट प्रोवाइड करेंगे इन टॉप ऑल्सो, राइट। इन टॉप ऑल्सो वी नीड टू प्रोवाइड ए नेट। जैसा नेट हमने बॉटम में प्रोवाइड किया है वैसा ही एक नेट हम टॉप में भी प्रोवाइड करेंगे। वाई? क्योंकि जब इस पर से लाइव लोड पास होगा, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दैट लाइव लोड एक
स्ट्रक्चर का पार्ट अगर कॉम्प्रेशन में है तो कहीं दूसरी जगह हो सकता है कि द पार्ट इज गेटिंग लिफ्टेड अप बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो देयर विल बी एक्टिंग टेंशन इन द टॉप, सो एज टू टेक केयर ऑफ दैट टेंशन वी प्रोवाइड सम रेनफोर्समेंट। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डिजाइन इट फॉर द क्रिटिकल पोजीशन, टॉप में टेंशन नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने बोला है सो एज टू गिव द शेप टू द सेक्शन, सो एज टू इंप्रूव द डक्टिलिटी। अगर हम कंक्रीट को बहुत रखेंगे और उसके अंदर सिर्फ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील रखेंगे, then it will be difficult to transfer the stresses from steel to concrete. अगर वहां पर बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर कुछ क्रैक डेवलप हो जाता है तो देयर मस्ट बी क्रैक अरेस्टर्स, दोस क्रैक्स मस्ट गेट अरेस्टेड बाय द स्टील, राइट। डक्टिलिटी, टेम्परेचर, श्रिंकेज, ये सब की वजह से जो क्रैक्स आएंगे वो नहीं होना चाहिए। सो वी नीड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ सप्लीमेंट्री और अनटेंशनड स्टील, तो ये हम अनटेंशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज द लास्ट पार्ट, सप्लीमेंट्री स्टील। हाउ टू कंसिडर द सप्लीमेंट्री स्टील? तो ये जो सप्लीमेंट्री स्टील है हमने पहले बताया कहा जहां पर मूवमेंट ज्यादा रहेगा वो डायरेक्शन में पहले प्रोवाइड करना चाहिए। ये वन वे स्लैब है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन द मूवमेंट विल बी, सो वी हैव टू प्रोवाइड द स्टील फर्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्पैन, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी प्रोवाइड करेंगे। नाउ व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टील टू बी प्रोवाइडेड, सप्लीमेंट्री स्टील और एनी अदर स्टील? प्लीज रेफर द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। मुझे जरा ढूंढने दो कहां पर है, वेयर इज दैट डक्टिलिटी क्राइटेरिया? डक्टिलिटी क्राइटेरिया मुझे ढूंढने दो। फ्रॉम द डक्टिलिटी रिक्वायरमेंट द स्टील इज टू बी प्रोवाइडेड। Okay, please refer page number 171. It is section 16 of IRC 112/2011. Section 16 and it is page number 171. What is this about? Detailing requirements of structural members. Detailing requirement. अभी क्या देता है? Detailing requirements given below are in addition to those given in section 15. Section 15 में भी उसने बहुत सारे डिटेलिंग का डिटेलिंग दिया, स्टील का डिटेलिंग वगैरह कैसे रहना चाहिए सर। उसके अलावा और अभी क्या देता है? इट इज 16.1 उसका सेकंड पार्ट ऑन पेज नंबर 171. What it says, minimum area of reinforcement are given in order to prevent a brittle failure. अचानक से brittle failure नहीं होना चाहिए. For that there is a criteria for the minimum area of reinforcement. Wide cracks, क्रैक वाइड नहीं हो जाना चाहिए, क्रैक अरेस्ट हो जाना चाहिए। पहले तो क्रैक नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक होता है तो दोज मस्ट गेट अरेस्टेड। क्रैक का विड्थ इंक्रीज नहीं होना चाहिए एंड आल्सो टू रेजिस्ट द फोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम द restraint actions. These are the three reasons for which there is a limit for the minimum area of steel. Minimum area of steel. हमने कितना मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना चाहिए? एक तो डक्टिलिटी इंप्रूव करना है। डक्टिलिटी इंप्रूव करना है इन द सेंस ब्रिटल फेलियर को अवॉइड करना है। ए डक्टाइल फेलियर मींस व्हाट? Before failure, the structure will give sufficient deflection, sufficient warning to make corrections. Structure आपको काफी डिफ्लेक्शन बताएगा फेलियर से पहले। You will have sufficient time to make the corrections. अगर डक्टिलिटी फेल हो रहा है तो इसका मतलब इलोंगेट हो रहा है, यील्डिंग नेचर का फेलियर हो रहा है। यील्डिंग इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, एकदम अचानक से यील्ड नहीं होता है, स्लोली यील्ड होता है स्टील। सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू मेक द करेक्शन, दैट्स व्हाई देयर इज अ लिमिट टू दैट। अगर मैंने नहीं प्रोवाइड किया मिनिमम एरिया तो क्या होगा? बोलता है ब्रिटल नेचर ऑफ फेलियर। ब्रिटल इज सडन फेलियर।
अगर स्टील भी प्रोवाइड किया लेकिन बहुत कम प्रोवाइड किया, लेस देन द मिनिमम, इट विल गेट क्रैक. अगर आपको याद रहेगा IS 456/2000 में भी लिमिट्स है स्टील के. AS डिवाइड बाय BD इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाय F5. This is for tension. Minimum steel. Maximum 0.04 times of BD. That is 4% of the cross area. This is maximum. This is minimum. हमें इतना रखना चाहिए. मिनिमम क्यों? अगर बहुत कम भी चाहिए तो हम बोलते हैं इतना तो रखना ही रखना चाहिए. That is from the ductility requirement. This is for flexure. शेयर के बाद भी एक इक्वेशन है. ASV divided by B into SV is equal to 0.4 divided by 0.87 times of Fy. It is the minimum shear reinforcement. क्यों? क्योंकि डक्टिलिटी के लिए हमको हो सकता है कि इतनी बिल्कुल जरूरत ना रहे. समटाइम्स वी मे नॉट टू प्रोवाइड एनी शेयर एनफोर्समेंट, तो भी बोलता है कि मिनिमम ये शेयर का क्राइटेरिया है. व्हाई? दैट इज फॉर द डक्टिलिटी पर्पस, सो एज टू अवॉइड द ब्रिटल नेचर ऑफ फेलियर. सेम इज द केस हियर. हियर आल्सो वी नीड टू प्रोवाइड द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील टू अवॉइड द ब्रिटल फेलियर, टू अवॉइड द फ्रैक्चरल फेलियर, टू इंप्रूव द डक्टिलिटी, to reduce the chances of cracking. If at all the cracks are developed, to arrest the cracks, to allow not to propagate them, not to allow to propagate, not to allow to increase the width of crack. For these reasons, we have to provide minimum area of steel. Now, what are the guidelines for the minimum area of steel? Please refer. पहले कॉलम्स के लिए, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह के लिए दिया है. For solid slab, where is it for solid slab? Which page number is for the solid slabs? Minimum area of steel in the slab. It is clause 16.6. It is on page number 181. It deals with the solid slabs. यहां दिया है. This clause applicable to two-way and one-way solid slabs. अगर two-way slab है, one-way slab है, solid slab है, then this clause is applicable. Where effective span to the thickness ratio is equal to or greater than 5 in both the directions. For two-way and in the direction of span for the one-way slab. Ours is one-way slab. कितना span दिया है? 9 मीटर. Divided by how much is the thickness? 450. So what is the ratio? 45 to 20. So this ratio is 20. It is greater than 5. So the clause is applicable. This clause applies to two-way and one-way solid slab where the effective span to the thickness ratio is equal to or greater than 5. It is 5. It is more than 5. So this clause is applicable. What is it? Flagrant reinforcement. So this is the flagrant reinforcement. General. It is 16.6.1.1 on page number 181. What it says? Second part of that I am reading. The minimum and maximum steel percentages in the main direction should be as for the beam given in clause 16.5.1.1. ये क्लॉज बोलता है कि मिनिमम और मैक्सिमम स्टील परसेंटेज का जो क्राइटेरिया बीम के लिए दिया है वही क्राइटेरिया स्लैब के लिए भी एप्लीकेबल है. तो हमको ये क्लॉज रेफर करना पड़ेगा. 16.5.1.1 that is for beam and it is equally applicable for the solid slab. So please refer there. चलिए वहां जाते हैं. कितना दिया है? 16.5.1.1. What is that? 16.5.1.1. कहां पर है ये अवेलेबल? It is available on page number 175. Minimum and maximum reinforcement percentage. The effective cross-sectional area of the longitudinal tensile reinforcement should be not less than the required to control the cracking. Section 12, not less than AS minimum where. अभी ये ductility criteria. This is from the requirement of the ductility. What is it? AS minimum. That is the minimum area of steel. Must be equal to 0.26 FCTM divided by FYK BT into D, but not less than, so it cannot be less than 0.0013
BT into D. This is for the minimum area of steel. This is from ductility limits, from the ductility criteria. So that the section must be sufficiently ductile. What is the minimum area of steel to be provided? This equation is available on page number 175, 16.5.1.1. आपको बहुत सारे क्लॉजेस बहुत सारी जगह से रेफर करते रहना चाहिए. IRC 5, IRC 6, IRC 112. हमारे लिए तीन कोड बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द डिजाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज कंसर्न. IRC 5 में बहुत सारे जनरल गाइडलाइन डिफिनेशंस, carriageway widths and all those things are discussed. IRC 6 में लोड्स क्या रहेगा, लोड कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, कैरेज वे विड्थ कितना रहना चाहिए, 1 लेन 2 लेन 3 लेन, उस पर IRC क्लास ए का कैसे रखोगे, ए कैसे रखेंगे, ऑल दोज गाइडलाइंस आर देयर. इन IRC 112 सब डिटेलिंग है, डिजाइन का डिटेलिंग, लिमिट्स, बाउंड्रीज क्या रहना चाहिए, सच दैट it must be safe in ultimate limit state, it must be safe in serviceability limit state, it must be safe in, it must be sufficiently ductile, right, and cracks वगैरह भी सब, all those must be within the limits. So from the ductility limit, this is the minimum area of steel to be provided, 0.26 FCTM divided by FIK BTD. Now what is FCTM? Where will you get the value of FCTM? कहां से मिलेगा FCTM का वैल्यू? Can you refer that table which is on 6.5, table 6.5? इससे पहले भी हमको वहीं से मिला था FCTM. Table 6.5. Will you please refer table 6.5? Do we have the value of FCTM available there? Table 6.5. FCTM, yes, FCTM is available. It is the third row, FCTM for different grades of concrete. What is the value of FCTM for M60? What is M60 grade of concrete? So what is the value of FCTM? FCTM. How much it is? ये FCK, FCM, FCTM, FCTK ये सब यहाँ पर डिफाइन किया है. What is the value of FCTM for M? What is the grade of concrete? It is FCK is equal to 60. So what is the value of FCTM corresponding to that? It is equal to 4. हमने इससे पहले FCTD भी कैलकुलेट किया था, वो FCTM डिवाइडेड बाय गामा m था. इज इट राइट? FCTK डिवाइडेड बाय गामा m था. FCTK which is corresponding to 0.05 डिवाइडेड बाय FCTD. यहाँ पर FCTD नहीं है, FCTM. This FCTM is available in table. This is available in table 6.5 on page number 38. So we have got this value FCTM. Now what about this value of FYK? It is the yield strength of steel characteristic. और FYK का वैल्यू कहाँ मिलेगा? उसके लिए भी एक कर्व यहाँ पर दिया है, मुझे जरा ढूंढने दो. That curve is given here. That curve is available. हाँ, where is that curve? मुझे थोड़ा जरा ढूंढने दो. FYK is defined, but where is it defined? FYK. Please refer page number 29. Please refer page number 29, clause 6.2.2. Clause 6.2.2.
clause 6.2.2 on page number 29. What is given here? See, table 6.1, the grade of reinforcing steel, mild steel HYSD, वहां पर बहुत सारी ग्रेड दिया है. फिर क्या लिखता है उसके बाद 6.2.2 द स्ट्रेंथ डायग्राम मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब यहां पर डिफाइन किया है. The minimum strength as specified in relevant IS standard, which is either the yield strength in case of mild steel or 0.2% of the proof strength in case of high yield steel, is nationally taken as the characteristic strength FYK. So FYK is nothing but the characteristic tensile strength of steel. तो हम यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा व्हाट ग्रेड ऑफ स्टील आई वांट टू यूज. ये जो स्टील हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, से अज्यूम वी आर यूजिंग HYSD, high yield strength deformed steel. Say it is nothing but Fe415. So what was the value of FYK? 415 MPa. The characteristic tensile strength of steel. It is given here 6.2.2 on page number 29. अगर माइल्ड स्टील रहेगा तो उसका यील्ड स्ट्रेसेस कंसीडर करना है. अगर टॉर्क स्टील रहेगा तो उसका 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेंथ कंसीडर करना है. 0.2% proof strength is the characteristic tensile strength of steel, FYK. You can refer another clause also. It is 18.2.1 on page number 200. It is table 18.1 on page number 201. So as to get the value of FYK. यहां पर भी बोला है उसने 6.2.2 में बोला है कि अगर HYSD है तो इट इज 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, और ये जो 415 लेते हैं, डेट इज द 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस. नाउ रेफर सेक्शन 18, क्लॉज 18.2 ऑन पेज नंबर 200. What is written here? Untensioned steel. The minimum strength as specified in the relevant BIS, Bureau of Indian Standards, which is either the yield strength in case of the mild steel or 0.2% proof strength in case of the high yield steel, is nationally taken as the characteristic strength. फिर क्या बोलता है? The main definitive properties and grades are given in table 18.1. 18.1 next page पर दिया है. Here it is. Reinforcing steel. Page number 201. देखिए HYSD, different grades of steel are given. This is for mild steel. These are for the different graded steel. Fe415, Fe500, Fe500D, Fe550, 550D, Fe600, like that. If it is Fe415, then what are the values are to be considered? This is FYK. See here, minimum yield stresses or 0.2% proof stress. That is FYK. If it is Fe415, that is to be considered as equal to 415. That's why we are considering, assume we are using HYSD with Fe415. So the value of FYK is equal to 415. So we have got the value of FCTM. We have got the value of FYK. B is nothing but the bit and D is nothing but the overall depth. Overall depth of section we are considering. So what will be the minimum area of steel required? Will someone please answer this? What is the minimum area of steel required? A, yes, minimum. That will be equal to 0.26 multiplied by FCTM 4 divided by Fe415. So this is 415 multiplied by the width of section is 1000 divided by D is the overall depth, that is 450, and it cannot be less than 0.0013. It is nothing but 0.13% actually. B into D. B into D. So tell me the answers.
minimum area of steel required from the ductility criteria as given in clause 16.5.1.1 on page number 175. Minimum. BT denotes the mean width of the tension zone. So it is a rectangular only. So the tension zone means अगर फ्लैंक सेक्शन रहता था तो टेंशन जोन बॉटम में रहता था. अगर फ्लैंक सेक्शन का बीम है तो बॉटम बोल तो डेट इज विड्थ ऑफ बीम वेब ऐसे हो जाता था. बट दिस इज ए सिंगल रेक्टेंगल. बॉटम और टॉप हर जगह उतना ही विड्थ है इसका. दैट्स व्हाई इट इज 1000. 1127.71 1127.71 mm square and it cannot be less than. ये कितना रहेगा? 585. Thank you. So it is greater than 585 mm square. Okay, ठीक है, fine. This is from the ductility requirement. Now, from the limit state of serviceability cracking, so as to avoid the cracking, there is one more condition. हमको वहां से भी देखना चाहिए कि कितना स्टील प्रोवाइड करना है. अगर मैंने उससे कम प्रोवाइड किया तो क्रैक हो जाएगा. For that we need to refer section 12. Please refer section 12 of the code that deals with the cracking. सेक्शन क्रैक नहीं होना चाहिए. अगर क्रैक भी होता है तो उसका विड्थ ऑफ क्रैक मस्ट बी लिमिटेड. दिस इज सेक्शन 12. See, it is on page number 120. What does it says? In order to verify the structure and structural elements perform adequately during service life, सर्विस कौन से चीज के ऊपर डिपेंड करता है. The serviceability limit state shall have to be satisfied. The serviceability limit states are stress level, crack width and deflection. Stress level, those are nothing but the internal stresses. जो सबसे पहले हमने ZB, ZT वगैरह चेक किया है, such that the stresses are within the permissible limit. So that is the stress level or the internal stresses. Serviceability limit state, internal stresses. फिर दूसरा बोलता है क्रैक विड्थ, तीसरा बोलता है डिफ्लेक्शन. अभी हम क्रैक विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं. So for this crack width or for the minimum area of steel to avoid the crack, please refer 12.3.3. Please refer clause 12.3.3. It is available on page number 122. What does it says? ऊपर जो दिया है टेबल 12.1 अगर आप रेफर करते हो तो डेट इज अबाउट द व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ क्रैक डेट इज परमिटेड. डेट इज मेंशन देयर. मॉडरेट कंडीशन, सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम कंडीशन. सो द व्हाट आर द मैक्सिमम पॉसिबल क्रैक विड्थ्स परमिटेड, दोज आर मेंशन्ड देयर. राइट, डेट इज इन टेबल 12.1 और 12.3.3 minimum reinforcement for the crack control. What is the minimum reinforcement to be provided? A minimum amount of, it is available on page number 122. A minimum amount of untension reinforcement is required to control the cracking in area where the tension due to external loading or external restraints is expected. The amount of such reinforcement may be estimated from the equilibrium between the tensile force in concrete just before the cracking and the tensile force in steel at yielding. Second part of that clause, minimum area of reinforcement will be calculated as follows. In profile cross sections like T-beam and box girders, minimum reinforcement should be determined for the individual parts of the section, web and flank. What is the equation here for the minimum area of steel? AES minimum into sigma S is equal to KC. ये टेंशन इज इक्वल टू कॉम्प्रेशन कर रहे हैं हम, इंटू के इंटू FCT इफेक्टिव इंटू ACT. दिस इज फॉर द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील. सी दिस इज नथिंग बट द टेंसाइल फोर्स.
The stress is multiplied by area is the compressive force. So we are equating the compression with the tension when it is cracking, when it is at the verge of cracking. That time we are equating the tension with the compression as the above part of that clause says. Area minimum area of steel. अभी हमको एक वैल्यू चाहिए. What is sigma s? Sigma s के लिए you need to refer page 123. What is sigma s? What is sigma s? In the absolute value is the absolute value of the maximum stresses permitted in the reinforcement immediately after formation of the crack. This may be taken as the yield strength of the reinforcement, that is Fik. So this can be considered as equal to the Fik, and Fik is equal to 415 MPa. The characteristic tensile strength of steel, that is nothing but the 0.2% of HYSD. It is Fe415, so it is 415 MPa. We have got the value of sigma s. As minimum, the minimum area of steel required. What is next now? Kc, K, ये हमको सब चाहिए. चलिए, what is Kc? What is Kc? कहाँ डिफाइन किया है? Kc is defined on page number 124. What is it? Is a coefficient which takes into account of the stresses distribution within the section just prior to the cracking and of the change of the lever arm. When it is a pure tension member, Kc is equal to 1. लेकिन हमारा pure tension member नहीं है, हमारा तो flagrant member है. So for bending or the bending combined with the axial force, हाँ हमारा ये केस है. Axial force भी because it is pre-stressing, तो axial force भी है और bending भी है. For rectangular section and web of the box or T section, हाँ हमारा ये केस है, it is a rectangular section. So the equation for Kc is 0.4 in bracket 1 minus sigma c divided by K1 H divided by H star FCT effective. And this whole must be less than or equal to 1. No problem. भाई ये सब इक्वेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आपको इक्वेशन यूज करके आना चाहिए, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है. कौन सी इक्वेशन कहाँ है, कौन से नोटेशंस कहाँ डिफाइन किया है, वो वैल्यूज कैसे लेना है, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच दोज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल, हमको ये पता रहना चाहिए. Kc का वैल्यू इज इक्वल टू 1 व्हेन इट इज ए प्योर टेंशन मेंबर, लेकिन हमारा टेंशन मेंबर नहीं है, हमारा फ्लैग्रल मेंबर है, बट इट इज नॉट प्योरली फ्लैग्रल, इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल आल्सो. तो जब फ्लैगर है या फ्लैगर एंड बेंडिंग एंड एक्सियल कंबाइंड है, देन हियर इज द इक्वेशन फॉर Kc. So is equal to 0.4 in bracket 1 minus. What is sigma c? Sigma c is defined here on page number 124. It is NED divided by BH, where H is the overall depth. It is nothing but the NED is nothing but the axial compressive force. So it means that sigma c, जो भी हमने पहले डिटरमाइन किया था sigma cp, अगर आपको याद रहेगा, क्या लिया था हमने? It is nothing but eta p by a. So it is the same thing here. It is defined. Sigma c, NED divided by BH. What is NED? Axial force. BH, it is the area. तो eta p by a हमने पहले से लिया है, वो sigma cp, it is the same thing. कितना था? 4.172. So this value is already available with us. So it is 4.172 divided by. What is K1? अभी K1 यहाँ पर नीचे डिफाइन किया है on same page number 124. K1 is a coefficient considering the effect of the axial force on the stresses distribution. K1 is equal to 1.5 if NED is a compressive force. NED is that compressive force which is pre-stressing force, and it is compressive. So the value of K1 to be considered is equal to 1.5. So this is 1.5. K1 is equal to 1.5, and this is given on page number 124. ये सब यहाँ पर डिफाइन किया है, कुछ नया काम नहीं है, कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है. All these equations are available
ऑल नोटेशंस आर डिफाइंड. आपको नोटेशन समझ में आना चाहिए, आपको उसको यूज कैसे करना समझ में आना चाहिए. Now next is h upon h star. H is what? The overall depth of the section. That is 450. Divided by what is h star? ये h star भी यहाँ पर डिफाइन किया है. Please refer the next page. What is h star? H star is equal to h for h is less than 1. H star is equal to 1 for h is greater than 1. H star is equal to h for h is less than 1 meter. H star is equal to 1 meter for h is greater than or equal to 1 meter. H is nothing but the depth of the section. So what is the depth of our section? This over the depth of the section is equal to 450. So it is less than 1 meter because this is 450. So h star must be equal to h. इसका मतलब h star will also be equal to 450 only. अब क्या चाहिए? FCT इफेक्टिव. सब डिफाइन किया है. नीड नॉट टू वरी अबाउट. बहुत मुश्किल काम नहीं है. हमको यहां रखना है सिर्फ वैल्यूज. व्हाट इज दैट FCT इफेक्टिव? FCT effective must be defined here. You please refer for FCT effective. Okay, page number 123. ये यहाँ पर दिया पेज नंबर 123. FCT effective is the mean value of the tensile strength of concrete effective at the time when the crack may first be expected to occur. FCT effective is equal to FCTM. FCT effective is equal to FCTM. That is defined here. What is it? Is the mean value of the tensile strength of concrete effective at the time when the crack may first be expected to occur. FCT is equal to FCTM. और FCTM तो हमने पहले से कैलकुलेट किया है. How much that FCTM is equal to? हमने इससे पहले भी यूज किया है ना FCTM का वैल्यू. How much that FCTM was from that table 6.5? Please refer table 6.5. FCTM का वैल्यू अवेलेबल है वहां पर. Table 6.5. What is value of FCTM? FCTM. It is 4. This is equal to 4. So it will get multiplied by 4. Must be less than or equal to 1. So what is the value of KC? कितना आ रहा है बोलिए. मुझे यहाँ पर सब चाहिए. सिग्मा एस मिल गया है. दिस इज द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. केसी ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं. फिर के रहेगा, एफसीटी इफेक्टिव रहेगा, एसीटी रहेगा, एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यूज. सो हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ केसी? 0.122. थैंक यू नोमान. थैंक यू नोमान. थैंक यू नोमान. थैंक यू आमिर. 0.122. We have got the value of Kc. What you require next is K. अभी K कितना रहेगा? See, for K अभी हम रेफर करेंगे सेम. वहां पर नोटेशन सब डिफाइन किया है. प्लीज रेफर हियर K. पेज नंबर 124. पेज नंबर 124. What is K? Is the coefficient which allow for the effect of the non-uniform self-equilibrating stresses which lead to the reduction of the restraint forces. It is equal to 1 where width is or the depth is less than 300. Is equal to 0.565 when h is greater than 800. हमारे पास कितना h का वैल्यू है? h is equal to 450. अगर 300 से कम रहता है h का वैल्यू देन 1. अगर 800 से ज्यादा रहता है देन 0.65. एंड व्हाट अबाउट फॉर ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन? यहाँ पर दिया है इंटरमीडिएट वैल्यूज में बी इंटरपोलेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ k. अभी मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा.
300 के लिए करस्पॉन्डिंग है 1, 800 के करस्पॉन्डिंग है 0.65. Now I require to have the value corresponding to 450. So it is 1 minus 300 को मैंने रेफरेंस लिया है, क्या रहेगा? दिस विल बी 1 minus 0.65 divided by this difference of these two, 800 minus 300 multiplied by 450 minus 300. Get the value of key. So सिग्मा एस का वैल्यू कितना मिल गया है अभी हमको? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एस? सिग्मा एस वाज इक्वल टू कितना लिया था? एफ आई के ना, सो दैट इज 415. सिग्मा एस अवेलेबल है. केसी इज इक्वल टू 0.122. नाउ गेट द वैल्यू ऑफ के. सिंपल इंटरपोलेशन. यहां पर उसने गाइडलाइन दिया है कैसे कैलकुलेट करना है. 0.895. Thank you. So this is equal to 0.895. Now FCT effective अभी मेरे पास था. FCT effective is equal to this. So multiplied by 4. Multiplied by what is ACT? What is ACT? ACT is defined here. What is ACT? ACT is also defined. Please refer page number 123. So for ACT, page number 123. What is page number 123 for ACT? Is the area of concrete within the tension zone. Tension zone में जो area of concrete है, the tensile zone is that part of the section which is calculated to be in tension just before the formation of the first crack. So what is the tension zone area? Tension zone area कितना रहेगा? अगर मैंने ये 1 मीटर वाइड स्ट्रिप कंसीडर किया है, 1 मीटर वाइड, this is the neutral axis, this is the tension zone. What is the area of tension zone? ये डेप्थ कितना रहेगा? 450 का आधा, so that is 225 multiplied by this weight, it is 1000. So put all the values are substituted here, get the minimum area of steel. कितना रहेगा? What is the minimum area of steel to be provided? क्योंकि अभी अगर इतना प्रोवाइड करेंगे तो क्रैक नहीं होगा. उससे पहले भी हमने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेगा, उतना रहेगा. इट विल बी सफिशिएंटली डक्टाइल. दिस इज फ्रॉम द क्रैकिंग क्राइटेरिया. सो व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड? What is the minimum area of steel required? I expect somebody to answer. और वो आज कहाँ चला गया? साकिब या कौन? यूसुफ को तो एक दिन आंसर देते रहता है. सूरज, केटकी, where are those persons? (236.8). Okay, fine. 236.8 mm square. See, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इतना रहना चाहिए डक्टिलिटी क्राइटेरिया से, इससे ज्यादा रहना चाहिए. मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इतना रहना चाहिए. Then what is the conclusion? What must be the minimum area of steel? जो ये सब में मैक्सिमम है, that is the minimum area of steel to be provided. So I will consider 1127.71 mm square is the minimum area of steel to be provided. अच्छा, ठीक है, कम से कम इतना मुझे कैलकुलेशन करके खत्म कर लेने दो. Then the remaining part we will do in the next class. This is for the minimum area of steel. What about the maximum area of steel? What is the limit for? इतना हम कैलकुलेट करके छोड़ देंगे.
ठीक है, नो प्रॉब्लम। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, बट मुझे कम से कम ये मैक्सिमम कैलकुलेट सो दैट वी विल हैव दीज वैल्यूज अवेलेबल 1127.71 एंड मैक्सिमम के लिए भी एक गाइडलाइन है। वेयर इज दैट? प्लीज रेफर 16.5.1.1 on page number 175. This is second part of that clause. The cross-sectional area of the tension reinforcement shall not be greater than 0.025 AC. AC is nothing but the gross cross-sectional area. The total area of tension and compression shall not be. अगर मैंने कॉम्प्रेशन साइड भी स्टील प्रोवाइड किया, टेंशन साइड भी स्टील प्रोवाइड किया, तो टोटल स्टील कैन नॉट बी मोर देन 0.0 टाइम्स ऑफ द ग्रॉस एरिया। ये कब? व्हेन इट इज ए डबली रेनफोर्स की बात चल रही है। दैट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील दैट कैन बी प्रोवाइडेड। अगर मैंने मैक्सिमम से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ब्रिटल नेचर का फेलियर आ सकता है। ओवर रेनफोर्स भी नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ज्यादा स्टील प्रोवाइड करा तो क्या होगा? टू मच ऑफ स्टील विल बी देयर इन द सेक्शन, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू पोर द कंक्रीट, देन इट विल बी डिफिकल्ट टू वाइब्रेट, क्योंकि हमको कंक्रीट का प्रॉपर कॉम्प्रेशन होना चाहिए बोलकर कभी वाइब्रेशन भी करना पड़ता है, वाइब्रेटर भी लगाना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्टील हो जाएगा तो वाइब्रेशन के लिए भी मुश्किल रहेगा, कॉम्पैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा, हनीकॉम्बिंग आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर विल रिड्यूस, दैट वी डोंट वांट। सेक्शन ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, वैसा भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई देयर इज ए लिमिट टू दैट 0.12, so it is 0.25 multiplied by 1000 multiplied by 450 कितना आता है? What is the maximum area of steel to be provided? कितना हो रहा है ये? How much it is? ठीक है, I am concluding just in 2-3 minutes. What is the maximum area of steel to be provided? ये सब अभी आपके पास रहना चाहिए। फोर्स कैरिड बाय वन केबल, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करना पड़ेगा, इसका स्पेसिंग कैसे डिसाइड करते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, स्पेसिंग कैसे डिसाइड करते हैं इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, फिर उसके बाद हमको डिजाइन करना पड़ेगा एंड ब्लॉक। तो अभी इतना पार्ट बच गया है, दैट विल डू इन नेक्स्ट क्लास। 1125 10 टू पावर 3 अरे इतना स्टील आ गया क्या? सो इट इज 112,500 mm स्क्वायर। तो हमने कितना प्रोवाइड किया है? ये मिनिमम, इससे ज्यादा प्रोवाइड करना है, इससे कम प्रोवाइड करना है, दैट्स ऑल। सो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मुझे सिर्फ डायमीटर ऑफ बार अज्यूम करना है, उसका स्पेसिंग कितना रहना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना रहना चाहिए, और उसके बाद एंड ब्लॉक। ठीक है, चलिए, ओके, आई अज्यूम दैट एवरीबॉडी इज टायर्ड, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास थर्सडे इंशाल्लाह। कंक्लूडिंग लेक्चर हियर, थैंक यू। कोड रेफर कीजिए, आईआरसी साथ में रखिए, कैलकुलेटर लेकर बैठिए, सॉल्व करते रहिए, रेफर करते रहिए। प्लीज रेफर अर्लियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको लगेगा कि मेनी ऑफ द थिंग्स वी हैव लर्न, अभी हमने जितना कर लिया इसमें ऑलमोस्ट आपको 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। वी हैव डन टू मेनी थिंग्स। हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेकिन उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीख लिया है। मेनी थिंग्स वी हैव लर्न, ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 30% ऑफ द पेपर आपको सॉल्व करने आना चाहिए। चलिए, थैंक यू।